Okay. We are live. Hello everyone. How was your day? कुछ भी तो नहीं हुआ ना? हाँ, मेरा भी कुछ नहीं हुआ. Okay. So let's start with the stream. उसके पहले मैं थोड़ा recording चालू कर दूँ. And I am currently streaming on only one platform and only one way, मतलब and not vertical. I'm not streaming on shorts now. अभी के लिए. We'll see that when that bridge comes. We'll cross that bridge, okay? अभी तो नहीं कर रहा मैं stream shorts में. I need to delete some things before I proceed. Delete this. Terminate this. Okay. और किसी ने मेरा शॉर्ट्स देखा? तो I hope you guys are enjoying that shorts. I just hope. Okay, we are back in the game. Yeah. Let's finish and do. Let's finish our ritual first. जो भी करना है वो कर लूँ पहले. Streaming on Twitch. She got 165. Let's become a part of our family. I'm not going to promote her YouTube channel, but yeah. He streams on Twitch, then streams on YouTube at the same time. But no, obviously I can't do that. That's not possible for me. My CPU will just blow up with that pressure. Okay, I think the sound is not that great. Let me increase it for you guys. 25%, yeah. Let's complete the dailies first. उसके बाद what's after that? There are two things, right? I haven't completed it yesterday. This thing, the flowers of oblivion, whatever. Let's complete this first. उसके बाद जाएंगे. Tower of Adversity complete करनी. Tower of Adversity. वो भी करना है मुझे. Yeah. Hope the streaming is clear क्योंकि I'm not streaming in huge quality. Okay, आज rollover यूज करने का मौका मिला है मुझे. I won't be letting that go. In this mode, I mean. Tune break is in skill HP burst. मिला ही तो नहीं है. Shit. Can't I get a universal bonus for this resonance liberation? Yeah, I mean, I will be using that. Why not use it, right? Let's do it. Will the approaching sounds be beautiful enough? Symphony of life. Oh, my shorts, are they looking great to you guys? वो भी बोलना. HP slightly increased, don't need that. Gain the difference. Basic attack should be great. Are we there yet?
What the hell, bhai? Will the approaching These are sounds havoc be resistance enemy and they are beautiful being enough? given to Absolute symphony of life. havoc damage dealing parties. नहीं देना चाहिए था ना? Where is rejoicing? All resonators everything increase the deal damage. Basic attack से तो अच्छा ही है. I think they were asking us to use Parthetia's team. Symphony of life. Witness blossoms in wilt. Leave it to me. Oh bro, the damage! The damage! The damage! Kill Prolova! That damage was unseen. Unseen or insane, whatever. Unseen, yeah, both are applicable here. Are we there yet? Resonance and skill. Always go for resonance skill because you are using Frolova. Attack person is always welcomed. Liberation, don't need that. Resonant cat, resonance liberation. Was 50% of their current HP to increase Atto and attack by Atto for nahi chahiye. Let's take this. Let's get out of here. And by the way, tomorrow is the day जब NT release होने वाला है. So I will try my best to stream that, but I am not. I am thinking that I won't be able to stream it anyways, because you know, bro, the recommended setting system requirement is huge. The damage Prolova is dishing out. Let's take this. Let's go with this because obviously I need some energy recharge. I'm mid-maxing my Carteria, so yeah. All my audiences are USA based, so I need to think about it. I mean, about my shorts, I mean. Thanks for coming here. I can destroy you in a single blow. वरना तो टाइम लग जाता. Will the approaching sounds be symphony of life? Okay. Resonance duration damage slightly increased नहीं चाहिए. Basic attack damage slightly increased. Gain dreams. Give dreams give energy upon defeating target. ये लेते हैं. Why not? Are we there yet? Are we missing something over there? Yeah, we are missing something over there. We weren't missing something over there. Prelude to arrival. Symphony of life. Meaningless rumble. Check it. Yeah. It's a good thing we checked, right? Critters massively increase additional triggered ones. What? What is this? Sigil, what do you mean by sigil? वो कभी use नहीं किया. Sigil additionally triggers ones. नहीं पता, I won't be bothering with it. Will the approaching sounds be? You prepare it with these. Chant songs of old. Leave it to me. I can keep it. That's getting cooked by. Dead. Are we there I think yet? we have received buffs of havoc. Even though
They are Havoc resistant, but I think we have received the buffs of Havoc so that we can deal huge chunk of damage to them. Prelude to arrival. We wither together. I'm very happy because I will have some content to do in streams. To be honest, I have content, but I don't think I should do that. Matlab, I have content of WUWA. I have another account that I can stream, but I don't want that because I think I will get Thus, you fall. a bonus for it. We मतलब wither together. होता है ना, if you are not logging in for quite a long time, resolution नहीं चाहिए, basically restores. Let's take this. तो होता है ना कि if you are not getting logged in for quite a while, at least for 2 or 3 months, you will receive. Where is rejoicing? You can log in from another account. मतलब एक bonus मिलता है. I don't know what it's called, but yeah, Symphony of life. एक bonus मिलता है. So I'm thinking of doing that rather than doing anything else. How they died in a single swipe. Oh, my thing is high. Absolute futility. Why change teammates? Right? Are we there yet? Yes, why switch to another team? Max HP and increase crit damage. नहीं चाहिए. Damage. Let's take this. Okay, we're at the last second stage. Heavy attack damage, we don't need that. When the active resonator deals damage, they deal slightly more damage and take slightly more. All are bad, and there is no way to reroll them. Oh, let's take this. Let's take this because I've already used it once and I know it's a good thing. Increase nahi chahiye. Not using Karthika. See, I told you, the game thinks that Will the approach I should be using Karthika's theme with Chikona. Symphony of life. Chant songs of old. Leave it to me, lady. Oh, this will be fun. Struggle. Arey, you missed it, Roloa. Symphony of life. Where is rejoicing? नहीं चाहिए. Let's take raw damage. Wanna see how much damage she can Will dish the out. approaching sounds be bitters, steady witness, blossoms in wilt. Leave it to me, loading, in war with time. Oh, this will be fun. Sleep Will it trigger an echo attack? Yeah. to sunken depths. There. Ensemble. 400. Okay. I think that's a typical damage. I could dish out this damage even when I'm not in this domain or game mode.
Not that much, but yeah, close to that. 200k, something like that. Okay. Let's do. No, let me check how much progress have we made. We made how much progress? Roving among the stars. Flicker a pivotal moment. This ends here. Connection severed. Stay behind me. Like frigid death. A change of crumble. Such is their blessing. Be gone, wicked souls. Repent. For silence beckons. Sounding the death knell. Face your destruction. Vexing windstorm. Sweep all away. Dismantle. Nothingness. Deconstructed. Flicker into form. Cut. Cutting through the numbers. Stay behind me. Frozen blockade. A
change your perspective. Heavens, descend! True form, revealed at last. Charge forth with me. Such is that blessing. Come, meet your end. Flicker into form. Structural integrity intact. Carry on. Stay behind me. Shackles be gone. A change of perspective. Such is that blessing. Purge the impure. Oceans. Bow before me. Tides, rise and vexing malice. The time. My blade. Purge all evil. You won't escape. Be gone, wicked souls. Such is that blessing. Symphony of life. Where's rejoicing? Witness blossoms in roads. Leave it to me. Astral modulation. I'll keep you company. Sleep in the whispers of silence. Fall from your bliss. Struggle. That tickles. Ensemble. Symphony of life. Prepare for beats. Begin. Thus you fall. Heed the echoes. The soul never entombed. Ordained. Loaded. I engraft you new. Take a breath and light here. To sunken depths. Sink into the endless deep. Annihilation.
Symphony of life. Life or death, no alternative. The soul, never entombed. Yo, bro. Yeah, back to WUWA. Sorry. और हाँ भाई, पहले बोलना भूल गया था, मतलब उस दिन आए थे, असाइनमेंट था तो चले गए थे। बोल दूँ उस दिन भाई तुम्हें क्या था, नाइट बॉट, आई थिंक नाइट बॉट ने तुम्हें भगा दिया था, मतलब डिलीट कर दिए थे तुम्हारा मैसेज। वैसे ही खामा ही का कर रहा था। सॉरी फॉर दैट। हाउ वाज योर फीवर या जो भी हुआ था, सिक, हाउ इज योर हेल्थ नाउ? नहीं मुझे सही है। कल तो एनटी आने वाला है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इफ आई कुड स्ट्रीम दैट वुड बी ग्रेट। मतलब जो टेक्स्ट वो लोग दिए हैं, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू स्ट्रीम दैट, पर मैं फिर भी देखूंगा सुबह इफ आई कुड स्ट्रीम दैट। That game is something else. I'm pretty hyped for that as well. आप नहीं करना चाह रही है? Take a breath and right here. Sink into the endless deep. मुझे रिस्टार्ट करना चाहिए, देखते हैं। Symphony of life. Cadence, height. Greatness blossoms in wilt. Leave it to me. Loading. In war with Tom. I'll keep you company. Oh, this will be fun. That tickles. Set the pace. Sleep in the whispers of silence. मर जा भाई। I've done your work. Annihilation. Symphony of life. एक और बॉस आएगा इसके बाद। Life or death, no alternative. The soul, never entombed. Oath from the heart. Loading. Astral Don't modulation. remember आने वाला है क्या या कि नहीं, तो I will still set up for the next. Okay, नहीं है। Feels much better bro. Short per views काफी तो हैं। Keep it up. Thank you brother, thank you. तो बोलो कैसा लगे शॉर्ट्स? अच्छे हैं? I'm trying my best. पर कभी कभी क्या हो रहा है पता है, मतलब YouTube किसी रैंडम लोगों को भेज रहे हैं वो। कभी कभी मेरा वुआ का चैनल बन रहा है अभी, तो वुआ कंटेंट को भेजो भाई जो देखते हैं वुआ, पर वो उन लोग को नहीं भेज रहा, वो किसी रैंडम बंदे को ही भेज रहा है। मतलब जो 2D 3D आर्ट देख रहा है, के पॉप देख रहा है, उन लोगों को भेज रहा है। व्हाई द हेल दे आर सेंडिंग दैट? Targets in sight. Correcting posture. Order executed. Stars, hear my queries. And एक दिन बाकी है ह्यूकी का लॉन्च होने में। Structural override. That is also there. Don't blink. You'll miss the best part. Check this out. Huh? Marked. One more. Ha! Ha! Shake it up. Ha! The form of might. Eclipse. Soul sing in harmony. To the Savior's victory. Smile. Sparks. Ignite the world.
control. Leave it to me. Processing complete. Initiating criticality protocol. Structural override. Drive safe. Tie a bow and call that my signature. Need a ride, sweetheart? Shake it up. The form of me. Target eliminated. Light show of the finale. यार ये नहीं करना था. Cleaves the night. Peril purged in light. कोई नहीं. Everything will be okay. Line lights checked. Body limit unlocked. The savior rises. At your command. Assuming master control. Access confirmed. Attack confirmed. Authorizing maximum output. Structural Drive override. safe. Special delivery. Go boom. थोड़ी देर रुक जाओ, ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद पढ़ेंगे. क्या है? Hey, first up, shake it up. The form of me. Like a boss in the world is mine to guard. Objective logged. Starlight over the seas. Scorch through the void. Endglow. Light show of the finale. Fire. Order confirmed. ओके इसके बाद इससे पहले चेक कर लें थोड़ा. मैं तो वेट करूँगा ह्यूकी पुल करने से पहले. ह्यूकी का मैक्स पोटेंशियल का चीज़ हाँ. पर आई थिंक वो शी विल बी ग्रेट, क्योंकि फिलहाल तो वो एनिवर्सरी यूनिट है ऑब्वियसली. And by anniversary units most likely should be busted, at least for WUWAs. I mean उसका वेपन का मैक्स पोटेंशियल के लिए या यू कैन डू दैट. आई विल रिकमेंड दैट. हाँ जो तुम कर रहे हो वही सही है, और आई विल बी पुलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ यूजिंग अ काटाना वेपन. आई कांट जस्ट कीप दैट बिकॉज आई लव katana and she is a Miko at the same time. ना ब्रो, वो Miko भाई दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं. I will be pulling both. I will be doing that on stream. So stay tuned for that. Best free to play weapon. Enrolled for हाँ वो तो है. फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है वो के लिए. मतलब ऑब्वियसली शी शुड बी यूजिंग हर मैक्सिमम पोटेंशियल वेपन व्हिच शुड बी हर सिग्नेचर वेपन. और तो 4 स्टार इतना कुछ अच्छा नहीं है. और एमरल्ड्स ऑफ जेनेसिस है आई थिंक. वेट सेम स्टैट्स देती है, देखने दो. थिंक ये स्वॉर्ड भी सेम मतलब नाम. हाँ एमरल्ड्स ऑफ जेनेसिस सेम स्टैट मिलेगा. ऑब्वियसली सब स्टैट विल बी डिफरेंट. टेलर मेड फॉर ह्यूकी ओनली वही मिलेगा उसका ऑफिशियल वेपन में. वरना यू कैन गिव हर दिस इफ यू वांट टू सेव ऑन सम एस्ट्रॉइड्स. हाँ तुमने बोला ना एमरल्ड ऑफ जेनेसिस बेस्ट फ्री टू प्ले प्लेयर. मेरा टीम ह्यूकी, चीसा एंड लूसिया. हाँ यू कैन डू दैट. मैं भी बाय द वे वही करने वाला हूँ. अगर मुझे लेट्स से आई लूज 50-50 ऑन डेनिया, क्योंकि मैं डेनिया फॉर कंटेंट पर्पसेस मैं वो भी पुल करूँगा. अगर डेनिया नहीं मिलता मुझे तो नहीं मिलती मुझे वो क्या वो भी जो भी हिंदी है. इफ़ आई डोंट गेट हर आई विल बी पुलिंग ऑन लूसीला फॉर द. फिर मतलब मुझे 2 टीम चाहिए कैसे भी करके समहाउ. एक एमेथ के लिए बिकॉज एमेथ विल बी यूजिंग लिने एंड मोर्नी, बट इफ आर सेम चीज ह्यूकी विल बी डूइंग द सेम. सो वी नीड समथिंग जो इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूँ मैं.
So I'm thinking of it. और अगर चीसा यूज कर पाऊँ तो हो गया काम. ओके क्या है यही. इसके बाद खत्म, मेरा खत्म हो जाएगा. और ये 2 आने वाले हैं. From the sky. All targets in sight. Order executed. Stars, hear my queries. Structural override. Drive safe. Don't blink. You'll miss the best part. Mark. Shake it up. थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा है. So that's a good thing. I mean, I'm talking about the Soul shorts. sing in harmony. To the Savior's victory. I won't be stopping stream Heroes on. because I like doing this. Even though no one is here except you guys जो आते हैं. Stars shine tonight. Assuming master control. All units fire. Attack confirmed. Initiating criticality protocol. Structural Drive override safe. initiated. Tie a bow and call that my signature. That's all you got? Huh? Need a ride, sweetheart? Ha. Yeah. Ha. Huh? Whirling up. Come on, little one. Starlight over the seas. Scorch through the void. Solar flare. End glow. Light show the finale. Fire. Order confirmed. Ghosts don't feel pain. Ready to launch. Aim system unresponsive. Starfall. Like a pot, the world is mine to guard. Objective. सब बफ चले गए भाई. Master cannon ready. The Savior ये मुझे बहुत बार टैगर कर दिया है. Assuming master control. Access confirmed. Processing authorizing maximum output. I hope time में complete हो जाए. Structural Drive override safe. initiated. Just hope. Special delivery goes boom! Go over here. Woohoo! Woo! One more. Hey, spurs up, shake it up, whirling up. Blade cleaves the night. Peril. First in light. Ha! Eclipse, heroes on. Lights up. Blind lights checked. Come on, little one. Feathers, come on. Stars. Light up tomorrow. Should be there this time. Limit unlocked. The Let's see. Savior rises. 700k. Okay, 1 million. देखा 1 million. Everything is done now. खत्म है भाई, खत्म है. हाँ हो गया. अब I will be returning to this place when I got Hiyuki in my team. टीम तो लीने एंड मोर्निया यूज कर लो. सेकेंड बेस्ट टीम. हाँ ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग दैट. थैंक यू थैंक यू. और करेक्ट बेस्ट टीम. Symptoms react. What? Which react? My third time. Like रहा था. Link YouTube comment remove Look over कर here. पाया. लास्ट वाला कुछ समझा नहीं मुझे. ओके
वाईटी ने कमेंट रिमूव कर दिया. Bad life brother. Not your fault though. Roving among the stars. ओके तो इसके बाद कुछ है मेरे को करने के लिए. Let's do the dailies. सब तो हो ही गया है. I think I will be going to my second account इसके बाद. Roving among the stars. मतलब कुछ है नहीं उसमें. स्टोरी ही है. Let's stop recording now. Roving among the stars. Sorry, fudge. Structural override These initiative. guys are immune to fire. Fusion damage नहीं करता इन लोगों को. Order executed. Well, at least we have Linne. Linne है. She will take care of them. अभी इतने सारे नहीं थे. चलो. What's the news? रिएक्ट करूं रुक जाओ. YouTube रिमूव कर रहा है. Wait. I'm trying it. You are asking me to react on it. I see. मैं इसका देखता था, नाम भूल गया था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था. That's why. Oh, sorry brother. रुक जाओ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ. इसको मैं पॉज करूँ पहले. इसका साउंड हटाओ. Okay, it's muted now. And उसके बाद के बाद लाइव स्ट्रीम नहीं. ये तो नहीं. वेट. वो टैब निकल गया था. It's taking some time. नहीं आ रहा, रुक जा. मैं यहीं पे घुसा दे रहा हूँ. Then we will be able to see it. यही है ना. यूकी का देखना है. मैं अपना लेटेस्ट वाला लेटेस्ट. दिस राइट. होली शिट. नहीं ये वाला नहीं. आई थिंक दिस. कौन से वाला? which one? I think the first one, right? This right? Team building and problems. All righty. Okay, I'm doing this. Ladies and gentlemen, the official full kit reveal for Hiyuki has arrived. And while Who did that? वो कब हुआ? ये हुआ कब? Okay. we've already done a full sort of like breakdown and overview of all of the different components of her kit, all of her different buffs, and of course, some of the teammate specific mechanics that she does have, it's time for us to alter that discussion a little bit, take a bit of a deeper dive, and get a little bit more practical with it. And the focus of today's discussion over here is going to be on, well, what team comps does she actually have available? What are you actually going to be able to use when she releases? And for us to sort of like tee off that discussion, mechanics that she has. So first things first, we got to focus on a couple of things, and they're right over here. She's going to be a liberation focused damage dealer. फिर तो लीने guaranteed अच्छा होने वाला है. Curl. What curl?
फिर तो ये लिबरेशन डैमेज मतलब लीनियर तो वो गारंटेड है, मतलब बेस्ट इन स्लॉट फॉर हर। अगर बस्ट हुआ तो फिर that मतलब also deals a फ्यूजन बस्ट significant जो amount जो of भी her है, मतलब damage, at least in फ्यूजन some बस्ट तो नहीं है, teams, वो through क्रॉस समथिंग Glacio था। Chafe. And so with those kind of like restrictions, or really those like typings in mind, there's one other thing that we're going to want to take a look at over here, and that's actually going to be her inherent skill, Find Snow. Because there are some teammate-specific buffs that she has very, very similar to Imith, where when she has a teammate that either applies Glacio Chafe or Havoc Bane, herself included, she gains some additional stacks of Snow Rust, and these stacks have some different effects. The first one that Hiyuki can just get by freeze. herself because she applies Glacio Chafe is Yep. a 30% amplification of Glacio Chafe, or really Glacio Bite damage, followed by a 40% crit damage buff. This makes her, at least at a 40? baseline, her personal stat gains that she gains are accessible on her own. However, when you get into stacks 2 and 3, this is clearly where a bit more of a negative status कमेंट तो focus देखो comes मेरा। from. Where, हाँ with the वही, second रुक जाओ, मैं stack, फोन लेके anytime आता she हूँ, रुक जाओ, वरना तो नहीं देख पाऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो मैं आ गया। फोन पास में ही था। ओपनिंग ओपनिंग मेरा खुद का चैनल ओपन करने में टाइम लग रहा है। Yeah, I'm in here. Let's do it. मेरा अभी चल रहा है ना मेरा मॉडल? हाँ ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। पूरा कर रहा हूँ मैं फुल स्क्रीन, अभी प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरा कमेंट तो देख। हाँ चलो। applies Glacio Chafe, and she does it a lot in her kit, by the way. She'll also deal an दिस इज ब्रोकन भाई, ये क्रिट डैमेज इंक्रीज कर रहा है 40% से, एंड ग्लेशियो बेट डैमेज जो एम्पलीफाई कर रहा है वो 30% से कर रहा है। additional burst of 102% Glacio Bite / Chafe damage. That's only accessible when Chisa is on her team. And with 3 stacks, Glacio Bite damage gains an additional 30% amp. However, this is not accessible, at least in the current version of the game, because you don't have a third character that applies Glacio Chafe or Havoc Bane as a whole. So those are just some of the restrictions to keep in mind. What was her name again? लूसीला राइट? नहीं क्या था उसका? लूसीला राइट? भाई अगर आया तो फिर तो ब्रोकन है। As we begin this discussion, and I've got a couple of teas prepared over here, which in my opinion are going to be the best teas for Hiyuki, with Sanhua, the other ice sculpture maker in the game, kind of representing Hiyuki Second over से आ रहे here, हो? listed from like the most effective ones on release to like kind of like goofy and बस probably PC से unviable stream ones as we get closer रहा। down the chain. Okay. So clearly the best team that you're going to have available is going to feature Chisa, due to her ability to increase negative status stack limits, which is what Glacio Bite's damage is going to be based off of, and the fact that having Chisa in the team is going to let you actually access the second stack of Snow Rust and deal that additional Glacio Bite damage every time Chafe is inflicted. And remember, Hiyuki inflicts a lot of that shit. The second teammate that you're going to have is, of course, going to be Lene. And one of the big reasons for that is Lene is able to provide 15% all damage amplification and then 25% liberation damage amplification. Okay, फिर उसके लिए तो मॉर्निंग को जरूरत ही नहीं है, मतलब मॉर्निंग इज फ्री। पर चीसा मतलब कार्तेरिया का टीम तो फिर गया, उसमें क्या यूज करेंगे? रोवर इतना अच्छा नहीं है, सो ट्रूथली बोलूं तो। Probably see what's going on over here. Lene is overworked. She is without a doubt one of the most valuable units in the game, and at least on Hiyuki's release, she's pretty much just going to be the best in slot on the Chisa team, specifically due to the fact that while she doesn't apply or give that additional stack, right, she goes ahead and provides a shit ton of amplification as well. And when it comes to Lene specifically, right, she also has some very, very, very powerful buffs, like
24% all damage increase percentage-wise from नॉट ओनली दैट, अगर तुम्हारे पास चीसा का S2 है, फॉर एग्जांपल S2 है, शी इज बस्टेड, उसमें भी आई थिंक बहुत ज़्यादा बोनस देता है चीसा। अगर मैं दिखा पाऊँ चीसा का S2, यू कैन सी इट। गेम 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 गेम, ये बंद करो, ये देखो, कैन यू सी इट? 50%। अगर किसी के पास है S2, इग्नोर्स 10% हैव अपग्रेडेशन, भाई बहुत ब्रोकन हो जाएगा, बहुत ब्रोकन अगर किसी के पास है तो। डैम, लेट्स कंटिन्यू। simply casting her liberation, and that's very good. You're also going to get, well, Tune Rupture's damage bonus whenever a Tune Break is done, and then Lene also provides Tune Break Boost 2, which is going to increase, well, the actual Tune Break damage that occurs on the team as well. Combine that with the fact that Lene's best in slot Sonata set over here, Pact of Neon Light Leap, well, we all know what this one does. It gives a pretty massive attack buff of 30% when Tomb Break Boost is available. Remember, Lene gives that herself. And then Hivatia just goes Basically, in and then gives you buff, 10% all attribute damage bonus as well, making your total buffs to Hiyuki like 34% all damage percentage increase, followed by 30% attack, and then like Tomb Break boost too. You can kind of see how it's all happening. And then you combine that with either Static Mist for like more attack, or if you have Lene's signature for some godforsaken reason, 24% more all damage percentage increase. You're probably seeing how Lene is, without even being a negative status supplier or really supporting the negative status archetype too much, you're probably beginning to see why Lene is going to be so good, even in the Chisa team. Then, if you have Chisa as well, and you also have Kumo Kiri on top of it, well, guess what? At max stacks, when Resolutors in the team inflict negative statuses, they gain 24%. So that's 24% from Chisa, potentially. Plus her defense down on Havoc Bane. I think she goes to like minus 10% defense. Then you got Lene over here with 24% from her Sig, or 15% from here from Static Mist. You can kind of see how there's going to be a lot of percentage damage increases that are occurring in this team. And again, despite the fact that you're not fully leveraging Snow, Rust, and all that negative status deal, well, guess what, guys? This is going to be her best in slot, and it is going to deal a lot of damage, and you will get a pretty solid level of performance out of this one. Still there. But do keep in mind that Lene is likely going to be replaced in the near future with the real Glacio Chafe sub DPS, specifically in this lineup, because we're going to have to get that third stack of Snow Rust somehow, and I'm pretty sure it's going to be from a sub DPS that's able to apply this effect over here, Glacio Chafe, as well as provide access to, well, the second user of this Sonata set, which is releasing in 3.3, the one where casting an outro skill removes Snowfall, which you can only get by inflicting Glacio Chafe, and then also providing Glacio damage bonus. That's who Lene is likely going to be replaced by, but do keep that in mind. That's going to happen in a future version. And we don't know who's going to have that capability. A lot of people are thinking Lucilla. Probably would make sense considering that Lucilla and like Hiyuki are like buddies in the lore. But you know, exactly my point. Now though, you're probably wondering, say, surely Chisa isn't mandatory, right? Surely you're going to be able to have some different team compositions, some different options that don't involve me pulling a character. And if you have Lene, chances are you also have one of Lene's best teammates, and that is Mornier. And this team composition over here, I think, is going to be pretty reliable, pretty strong, and is going to be able to get the job done, even if you're not really leveraging any real negative status interactions at all. Because naturally, you're only going to have one stack of Snow Rust in this team. You won't get that additional Glacio Bite damage application every time Glacio Chafe is done, but you'll replace that with some other noticeable bonuses, because we already know all the stuff that Lene is able to provide, right? But on top of that, instead of like, you know, increasing the negative status stack limit, Mornier's going to have her 25% all damage amplification, her interruption field too, and probably the most important thing, because Lene is going to be on the team in rupture mode, the bonus from her interfered marker, which is going to increase the damage taken by enemies by a whopping 40%,
assuming that Lucila Mornier and has enough Lucila, ER to no. actually make that Now possible. everything And so depends this on team my luck. over here, at मिल least in जाएगा my मिल जाएगा opinion, is going to be probably मैं सब जगह को बोल रहा हूँ, सब जो भी देख रहे हैं मेरे शॉर्ट्स वो अभी भी यहाँ पर भी बोल देता हूँ. May the legendary Miko be with you when you pull. ठीक है? I hope सबको luck मिले and everybody wins their 50-50 on at least Hiyuki and Lucila अगर वो Hiyuki की टीम में आए तो. बेसिकली Hiyuki की टीम में जो जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाए बस. Along with her Hiyuki's weapon. बाकी सबका मिले या ना मिले weapon. the second best team that Hiyuki has available, and it should, with all of the different buffs that Lene is providing, the attack boost She's as well, that and much special. most importantly, At least to the me. increase from Because I like Miko's off-tune build-up rate that and Mornier is going to have from generating her field. You're going to Katana break weapons. more, get those nice tune rupture damage amplifications, and have that available to you across Hiyuki's rotation. And, well, guess who's also rerunning in version 3.3? You're going to have Mornier as well. But if I were to make a decision over here, assume you don't have Mornier and you don't have Chisa, if you're trying to get the most performance possible out of your Hiyuki, it's probably better to go for Chisa. But if you're looking for the best overall add to your account, it might actually be better to go for Mornier. Simply due to the fact that Mornier, especially in conjunction with like some of the other mechanics that we have and likely Denya's release too, I think she's just going to have more use cases overall compared to Chisa. Chisa's only going to have 3 teams in the game, even in 3.3. It's going to be Denya Amith for Fusion Burst. It's going to be Kartithia Chikona, who she's always had. And then it's going to be Hiyuki Lene, which you're seeing over here. But guess what? You can Chikona just तो run नहीं है. Mornier Lene, and I'm pretty बहुत sure लोगों ने Hiyuki नहीं is लिया going है to do just Chikona. fine. Because remember what we talked They are about using before? Shanwa now. Hiyuki's going to be a liberation damage dealer. Well, you're not going to be focusing much on negative statuses. You're going to be focusing more on Hiyuki's overall damage. And, well, guess what? Hiyuki still has that 40% crit damage increase. And That's the main thing. By 40%. 40%. That's not a small number. 40% is a huge critical Even though damage. 30% Critical damage increase. And भाई उसका ग्लेशियो जो भी एको सेट है आई थिंक उसमें 20% इश क्रिट रेट मिलता है. दैट मीन्स योर बिल्ड इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय डिफॉल्ट. Glacial Bite Amp Super just easy to build, from right? existing by herself. It's not like the 40% crit damage is like locked away over here It's a or must something. pull. You'll have full Anniversary access to character. it वो without लोग too ऐसे ही much बना trouble, रहे हैं. right? So that's pretty cool. That's pretty neat. And I do think that this is going to be the मतलब second obviously if strongest you want to overall make team. your account Maybe future it'll bro. compete with some of the other options that we have later on. But if you have Imith's team, you'll probably have a team that Hiyuki can use too. That's just something to keep in mind. Moving forward, this is where the team comps are going to get a little bit goofy. They're going to get a little The way he explains is so much better. bit weird. जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई मैं स्टटर करके करके निकल जाता हूँ ऊपर नीचे. But do keep in mind, this is still the best that we got Well, for now. that's the reason Shorekeeper. he has so much subscribers. This is a right? circumstance where I'm not actually entirely sure if Shorekeeper is even like a good option, because what is the big draw of Shorekeeper? Her ability to increase crit rate, right? However, one thing you'll probably notice is that a unit like Imith is already pretty much at 100% crit rate. You can see that my Imith has like 76.6%. I could definitely use क्या बोलते हैं इसे मिड मैक्सिंग किया है पूरा 120 एनर्जी रिचार्ज दैट इज itself broken along with crit damage is 271 I think हाँ आउट ऑफ कॉम्बैट है. दैट मीन्स मॉर्निया एंड लीनिया का बफ जो 30% मिलता है वो नहीं है. क्रिट रेट है. ओ भाई मिड मैक्सिंग ऑन इट्स पीक भाई. some better echo rolls. But what does Imith's set give? 20% See? crit rate. Same thing. Hiyuki's set same. also Yeah. gives crit rate. And guess what Hiyuki's weapon provides? It's got the same exact base stats as Imith's. So Copy paste. I wouldn't be surprised Could've at did the copy all paste thing. if Hiyuki, with Frostburn, her signature, and her signature set activated, the Sonata, if she has very, very, very similar crit rate and crit ratios as Imith over here, pretty much close to 100%.
And if that is actually the case, then the value of Shorekeeper, right, in a team composition like this goes down dramatically. Simply due to the fact that, like, her main draw and her main appeal, her main benefit to teams, that crit damage increase, isn't really going to do that much, isn't really going to do anything for the DPS Copy unit paste, owner. yeah. And so copy paste. assuming that you actually do have Hiyuki over here in this circumstance, I think the team will work, but it will definitely feel Yeah. a lot better with a Mornier on it. And that's Huge just kinda damage like, loss होगा, huge damage loss. By Morny, she gives 40% attack buff, not attack buff, all damage buff देती है 40%, and Shorekeeper doesn't provide that. Obviously, she provides crit rate and crit damage, but she doesn't provide 40% damage buff. Not all attribute damage buff, but damage buff. Along with that, Shorekeepers provide you with 15% all attribute damage bonus, and Monria provides you with 25%, 10% more, and that's tells a lot. the reality. I think you'll be able to get it done, but this will likely feel a lot worse than Mornier, simply due to the fact that, again, Shorekeeper's main bonus, that crit, might not really feel that effective here. That's something to exactly. keep in mind. I know a lot of people were probably planning on using something like this to kind of like tide them through, maybe have like a good free-to-play option. Might not work out as well as you thought. And then you got like the tertiary teams over here, right, where you start getting a little bit desperate, So much and maybe you character decide to going summon well. like a Jin or something because she buffs liberation damage. Yeah, the teams are only going to get worse and worse from here, ladies and gentlemen, because if you're using Jin instead of Lene, I think you've already sort of admitted that you're going to have some characters. dog shit मतलब gameplay. जो new And your players clears are उनके not लिए- going to be nearly as good. If you Because if just you're ever make at the to- point where Jin is coming in, if you just want to make Hiyuki work, just work, कैसे भी करके, and you want to use her, then go for this team. This might work. हाँ, तुम्हारे पास शोरकीपर भी नहीं है, तुमने मिस कर दिया स्टैंडर्ड बैनर से, मतलब जो बिगिनर बैनर होता है, सैड लाइफ. instead of Lene, your shit is just kind of fucked. I'm going to be honest. Miss किया है Jin ना, is that मैं bad भूल of a गया. character. Now, though, दो और लोग this आए is where थे, stuff gets a little bit उनके साथ interesting. में मैं भी Imagine, confused हो गया. right? Maybe you have Chisa, but then you don't have Lene, or you're running Mornier, Lene, Imeth in another side of the TOA, or in another side of like WUWA or DPM or something. And you're just like desperate to find some way to use Chisa. Jeja might not actually be bad, right? Because Jeja's still gonna provide Okay, 20% glacial damage amplification. free-to-play That's team still नहीं something that's going to be है, usable so for sad. your या Hiyuki. फ्री टू प्ले नहीं है. However, you can also पर do some तुम्हारे deviation. पास ये जो दिखाया इसने, ये सही है, मतलब भैया ने जो दिखाया वो सही है. ये वाला टीम, if you have both these two teammates, you can make it work somehow. Okay. क्योंकि देखो, ये तुम्हें थोड़ा बहुत रेजोनेंस स्किल डैमेज बोनस या रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज बोनस थोड़ा बहुत प्रोवाइड करती है इसके आउटरो में, आई गेस. एंड शी गिव्स यू क्रिट रेट एंड क्रिट रेट. कुछ नेग्लिजिबल है पर कुछ तो बफ है, सो यू कैन मेक इट वर्क. It's just kind of fucked. I'm gonna be honest. Jin is that bad of Yeah. a character. या Now, obviously. Chisa, but then you don't Yeah. have Lene. Not completely or damaged you're to your running account अगर तुम्हारे पास Mornier, कुछ नहीं है, Lene, पर हाँ, Imeth damage in तो है. another side of the TOA, or in another side of like WUWA or DPM or something. And you're just like desperate to find some way to use Chisa. Jeja might not actually be bad, right? Because Jeja's I still don't going to think provide many people pulled her. 20% glacial damage amplification. That's still something that's going to be usable for your Hiyuki. However, you can also do some deviations over here, because guess who also buffs liberation damage? Who knows? Maybe this thing will work. Because then you'll have Yinlin, who actually buffs liberation damage by 25%, which is actually more than the 20% glacio that Jeja provides. This team is complete copium. Copium खा के चला रहे हैं ये टीम. भाई, I can see the vision, but this team is useless. Resonance यहाँ पे दिखा भी रहा है, resonance liberation 25% for 14 second. I can see, हाँ vision अच्छा है. 14 second में तो I think उसका Hiyuki का तुम्हारा जो भी resonance liberation होगा, I think she will be complete with her. all those हाँ जो भी है करेंगे वो.
करेंगा, क्या बोल रहा हूँ, जो भी वो करेगी आई थिंक दैट वो शुड बी इनफ, बट बहुत अनरिलायबल है, आउटरो करने में टाइम जाता है एंड नॉट वर्थ इट आई वुड से। और एंड आई डोंट थिंक बहुत लोगों के पास जो नहीं होंगे, जो लोग नहीं हैं, दोज पीपल हु आर न्यू टू दिस गेम, नहीं होगा, क्योंकि येनलिन का रीरन बहुत पहले हुआ था जहाँ तक आई एम अवेयर। मोस्ट प्रोबेबली चीसा और लूसीला में से एक तो मैं पुल करूँगा, कर लूँगा। कर लो भाई, कुछ तो पुल कर ही लो, मतलब एक और आता है, आई थिंक उसका नाम भूल गया, एस से स्टार्ट होता है, सोर्स आउट या कुछ आता है, मतलब एक बंदा आता है यहाँ पे, अच्छा भाई है भाई वो भी। वो उसके पास तो कुछ सब डीपीएस ही नहीं है। दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग आई वुड से, कुछ सब डीपीएस होना चाहिए, बट ही इज इंजॉइंग द गेम सो डजेंट मैटर। पर हाँ, इफ यू आर ट्राइंग टू क्लियर आउट, फिर से मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ, इफ यू आर ट्राइंग टू क्लियर आउट एंड गेम कंटेंट जस्ट लाइक मी, मैं जब किया तो हाँ तुम्हें तो सब डीपीएस लगेगा ही। जैसे कि तुम बोल रहे थे लूसिलिया या लिने, सॉरी चीसा, आई वुड सजेस्ट, तुम्हारे पास कार्तेटिया है, अगर कार्तेटिया है तो फिर आई वुड सजेस्ट ले लो, चीसा ले लो, फॉर एग्जांपल चीसा ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा लूसिला से। मतलब लूसिला, अब तुम अगर लूसिला को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के लिए ले रहे हो सो वो अलग बात है, पर हाँ चीसा वुड बी मच मोर बेनिफिशियल अगर तुम्हारे पास कार्तेटिया है। एंड शानवा तो फ्री में ही देता है सब, मतलब अकाउंट तुम्हारा, कूड़ो तो वैसे ही फ्री में ही बांटता है शानवा, सो यू कैन गेट हर एज वेल। सो कार्तिकेय का पूरा टीम हो जाएगा, जो मैं यूज़ करता हूँ बाय द वे, इफ यू डोंट नो। बट आउटडेटेड भी है, हाँ आउटडेटेड तो है, किसकी बात कर रहे हो, चीसा? चीसा, चीसा इज अ, मतलब गैम्बल कैरेक्टर है वो, जिन लोगों ने लिया है ना, बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है चीसा, सबका मतलब कोई कोई बोलता है हाँ भाई मेरे पास फ्यूचर कैरेक्टर प्रूफ कैरेक्टर आ गया, जब वो निकली थी तब तो कोई नहीं था यूज करने के लिए, ओनली जानी थी, जानी की टीम एंड कार्तेटिया की टीम, नॉट वर्थ इट। क्योंकि जानी में भी अगर तुम्हारे पास उसका सिग्नेचर वेपन नहीं है, चीसा की बात कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं है तो नो यूज़, चीसा, चीसा का कोई यूज़ नहीं है। एंड कार्तेटिया ओनली, एंड ओनली कार्तेटिया विल बी एबल टू यूज़ दैट, अभी चेंज किया है उन लोगों ने, पूर्ण ने चेंज किया है, सो हाँ, तो वो एक अच्छा चीज़ है। Assuming Hiyuki does the majority of her damage is liberation damage. So this could honestly be like some मेजोरिटी डैमेज ह्यू की विल बी डीलिंग रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज, मतलब उसका पहले इट्स काइंड ऑफ लाइक तुम्हारा अगर फ्रोलोवा का अटैक्स देखे हो, फ्रोलोवा यूजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वो जब अल्ट में जाती है ना तब वो इको स्किल डैमेज देती है, कंप्लीटली इको स्किल डैमेज, राइट? सो शी डिशेस आउट कंप्लीट इको स्किल डैमेज, पर उसके पहले शी डील्स रेजोनेंस स्किल डैमेज, राइट? तो वैसा ही है ह्यूकी का भी, मतलब वो पहले आई डोंट थिंक वो बेसिक अटैक वैसा कुछ करेगी रेजोनेंस स्किल, वो पता नहीं, पर जब वो एक होता है उसका फॉर्म चेंज, वो ब्लू, कंप्लीट ब्लू फॉर्म में जाती है, चले जाती है, तो उसमें कंप्लीटली रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज होने वाला है, जस्ट लाइक प्रोलोवा काइंड ऑफ। जीजी वाली टीम का बात कर रहा था, क्योंकि है, अच्छा, एकदम। sort of team that isn't like complete garbage, we can definitely आउटडेटेड तो देखो, तुम बोल रहे थे कि जीजी की टीम के साथ बोल रहे थे, मतलब हाँ आउटडेटेड तो होगा ही, एंड डैमेज ड्रॉप ऑफ तो अलग होगा उसका, ठीक है, उसका डैमेज ड्रॉप ऑफ तो अलग ही है, पर ऑब्वियसली अगर तुम्हें मेटा के साथ जाना है तो ऑब्वियसली पुल करना पड़ेगा। एंड अब मुझे पता नहीं तुम्हारे तुम्हारे पास कितना टाइम रहता है फार्म करने के लिए, कितना कितना कंटेंट तुम्हारे पास अभी भी लेफ्ट है तुम्हारे अकाउंट में,
आई वुड सजेस्ट फार्म इट, टेक, मतलब एक दिन डिसाइड करो, बैठो, पूरा फार्म कर दो, and attend all the events that are possible for you to complete, and obviously don't miss any dailies, मतलब dailies complete करना ही है कैसे भी करके. This is the drawback of playing a gacha. कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें डेलीज करना ही है. डेलीज बहुत जल्दी स्टैक अप हो जाते हैं. 60 मिलता है भाई, 60 मिलता है हाँ भाई. 60 तो वहाँ छोड़ दो, एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, ऐसे करना मतलब डिसिप्लिन चाहिए. इसमें भी डिसिप्लिन चाहिए, रियल लाइफ में भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है. मतलब ओ, कुछ काम अगर तुम्हें करवाना है खुद से, डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए. लाहरोय का मैप अनएक्सप्लोर्ड है, बस दो मैप 100% है, एक्सप्लोरेशन 40% अराउंड है. हाँ वही बोल रहा हूँ, करना है. मैं कैसे करता हूँ, अगर तुम्हें टिप्स चाहिए बोल दो, मैं वो भी बना दूंगा. वीडियो बना सकता हूँ, या फिर लाइव स्ट्रीम में बता दूंगा कैसे इजीली कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट एक एक मैप का चूज करो कहाँ पे करना है. एक एक मैप को भाई क्या बोल रहा हूँ, एक मैप का पार्ट एक बार में एक दिन में कर लो, रीजन वाइज करो, और इजी है आई वुड से. मैप में जाओ, मैं तो ऐसे करता हूँ, देखो थोड़ा बहुत दिखा भी दूँ, इजी होगा. ये बंद करो, आ गया ना. ओके सो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ. फॉर एग्जांपल ये है, ये थोड़ा लॉन्ग थोड़ा हार्ड है, इसको छोड़ो, नहीं करना. हम लोगों को ये इस पे फोकस करना है. ये जो है, ये तुम्हें दिखाते रहता है कहाँ पे क्या बाकी है. मेरा कंप्लीट है आई डोंट थिंक, इसलिए नहीं दिखा रहा. पर अगर कंप्लीट तुम्हारा नहीं है ना, तुम अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे दिखाएगा कि कहाँ पे है ये. तुम वहाँ पे ट्रैक करके चले जाना, कंप्लीट कर देना है. एंड डू दिस लाइक दिस, इसका एक दिन में ख़त्म कर दो. यही करना है बस, एक दिन में यही करना है बस. जो भी करना है एक दिन में बस. हाँ ये पूरा कंप्लीट करना है मुझे आज, ये कंप्लीट कर दो. वैसे ही टाइम लेके बैठना, ये कंप्लीट कर देना, इसके बाद ये पकड़ना, ये भी कर देना. ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-20 मिनट में हो जाता है ये. मतलब एक एक सेक्शन इजीली हो जाता है 10-20 मिनट में. अरे इवेंट कंप्लीट है, करूँ नमस्ते. 200 से 30 का एस्ट्राइड का सब हो जाएगा. हाँ नुकसान तो हो ही जाएगा, इसलिए बोल रहा था. इवेंट इज मस्ट भाई. इवेंट भाई बहुत, इवेंट से ही ज़्यादा जो भी इनकम होता है वही उससे ही होता है. डेली से ग्रेजुअल इनकम, एंड इवेंट से थोड़ा बहुत सुपर चैट की तरह आते रहता है. अरे मैं बाइक फ्लाई अपडेट का वेट कर रहा हूँ. हाँ वो तो अलग ही दे रहा है भाई. बाइक कैसे भी करके कूरो ने सोचा, हाँ लोगों को मतलब नहीं मिल रहा है राइट, बाइक फ्लाई करना नहीं आ रहा अभी, तो कैसे भी करके घुसा देते हैं तो इजीली सब लोग एक्सप्लोर करेंगे. तो उन लोगों तो पहले से ही सोच के रखा है, वो लोग अलग ही काइंड के बंदे हैं. बस लायरॉय ही बाकी है मेरा. अच्छा लायरॉय तो बाकी है तो फिलहाल तो फिर बाइक का जो है वेट कर रहे हो वही करो, आने दो उसके बाद कर लेना. सही डिसीजन है फिर तो सही डिसीजन है भैया जी. लेट्स कंटिन्यू, बार बार वेट कर रहा हूँ मैं. Really test it out and see how it goes, because that's still यहाँ 25% पे liberation मुझे damage. फिलहाल तो 2 बंदे देख रहे हैं, एक तो तुम हो या फिर तुम्हारा ही दोनों अकाउंट है. काइंडली आंसर मी दिस इफ देयर इज some other person. And well, guess what? It's not like you were really using your Yinlin for much, right, in the first place. And remember, this is kind of like something that you can do if you're... बहुत हेल्प हो जाएगा फ्लाई बाइक से. रॉयल रॉयल फ्रंट लाइन में बाइक चलाना बहुत मुश्किल. रॉयल फ्रॉस्टलैंड, अच्छा क्यों मुश्किल है. आई थिंक अच्छा तुम
वर्टिकल एलिवेशन की बात कर रहे हो आई गेस. अगर वर्टिकल एलिवेशन की बात कर रहे हो, समवन एल्स. ओके ओके, समवन एल्स. नाइस नाइस. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मी ब्रदर, जो भी देख रहा है. पर हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग. हाँ, तो रॉयल फ्रॉस्टलैंड थोड़ा बहुत तो हार्ड होगा ही, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा एलिवेशन है. आई थिंक उसके लिए नहीं कर रहे. फिर भी हार्ड ही होगा. फ्लाइंग फ्लाइंग अगर तुम कर भी पाओ ना, फिर भी हार्ड ही होगा. लेट मी टेल यू ए वाई. क्योंकि बहुत सारे चेस्ट केव के अंदर हैं. एंड आई डोंट थिंक फ्लाइंग में जो लोग वो दिखाए हैं, मतलब ओपन ओपन स्काईज में अच्छा होगा फ्लाइंग. पर अगर केव के अंदर उड़ने की कोशिश करो, आई डोंट थिंक वो अच्छा होगा. बहुत सारे चेस्ट अंदर हैं केव के, वो थोड़ा देख लेना. ठीक है. Mornier and Let's your continue. Lene, right, are busy with another character, probably Imeth in another Yeah. team. I This was is going something to say that might that. actually work, and it could get some of the less popular units on your account actually out there and doing something. So yeah, Judge is definitely a possibility over here. And unfortunately, with the lack of Glacio characters that we have on the roster, that's kind of like where the synergy ends. So do keep that in mind. It is a little bit unfortunate, but yeah, there's not really too many alternative options over here. You can definitely also like do some substitutes where you put in a Varina or a एटलीस्ट ये चीज़ें कुरो ने अच्छा किया है. मतलब वैराइटीज बहुत है तुम्हारी टीम का. पहले ये नहीं था. कार्थिटिया मतलब 2.x में बहुत स्पेसिफिक टीम निकल रहे थे. कार्थिटिया के लिए एक हो गया, जानी के लिए एक हो गया. वैसे अगस्टा के लिए एक, मतलब एक फिक्स टीम. तुम ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं कर पाते थे. यहाँ पे एटलीस्ट 3.x में ये लोग अच्छा कर रहे हैं कि हाँ, तुम लोग वैराइटीज है, यूज व्हिच एवर टीम यू वांट यूज. सो दिस इज अ ग्रेट Doorkeeper थिंग. instead. But do keep in mind that the teams are only Kudos are not able to optimize the game greatly, but at least they are doing this. So कुछ gonna तो get है. like worse and worse from here on out. So we're really starting to scrape the bottom of the barrel over here. Ergo, this one. Now though, you might be thinking, oh, Saint, what if we use a secret forbidden technology? And this is the What do you secret mean by forbidden that? technology that I'm talking about over here. You might not actually know what Baija sequence nodes contain, Huh? but there This is is a new? hidden gem at S6. And what this S6 does is it increases the glacio damage bonus of all characters nearby, everyone on the team, by 12% when you pick up her shitty little flower. 12% glacio damage plus ये नहीं पता 15% था. attack. Not This is new. bad. Well, Right? it's great, And so yeah. you kind of combine that with, oh, okay, you got her flower picked up, you get the glacio damage boost. Yeah, what if you decide to run like a mono glacio team with like Jeja as well as Hiyuki? It depends upon how much frequency, मतलब frequency के ऊपर डिपेंड करता है. वो फ्लावर कितने टाइम पर गिरता है, या फिर how frequently it falls on the ground so that we can pick it up. वो डिपेंड करता है ये. In the third slot. I don't even think this team is going to clear because Baija is such a bad fucking character. But like maybe if you have like R5 variation or something, you could like try to get it done. Nah, That bro, could be not neat. worth Like it. we could definitely try this one out, but I do think that this is going to be more goofy than effective. But it is something to keep in mind because, well, all the characters in this lineup will be Glacio, and so that 12% buff, hey, it might do more than anticipated. And one thing, ladies and gentlemen, that Hiyuki does not have a lot of access to in her kit, she doesn't have a lot of access to percentage damage bonuses. That's why Lene is like such a nice little piece for her. That's why Chisa's signature is nice as well. And like, hey, like Baija coming in with their S6 with 12%, maybe that'll do something. But this is definitely going to be like 500 times worse than a Chisa, so do keep that in mind. Yeah, like way worse than a Chisa in pretty much every single fucking circumstance. So like if you are running, if you're even thinking about gearing up Baija, that's more so like a testament to like, man, you are getting desperate, and that kind of maybe you should think about pulling you some don't other support. have- yeah. If you're running this team, God save you. That's basically why I put this in here. If you're ever at the point where you're even considering slotting in a team like this, you've been forsaken. So just don't let yourself get to this point.
I probably don't need to explain to you why this team is so bad. You don't even have the Glacio synergy, I don't think and you will there's be so many able to clear supports in this anything. game. It'd be better to run a Overall, Varina, मतलब but you're also ऊपर admitting जो that भी you है, I somehow don't think don't won't have a be Varina, clear you too. don't have a Shorekeeper, you don't have a Chise, you don't have a Mornier. And if that's the state of your account, you don't have any of those units, your shit is effectively fucking bricked. So, yeah, running this, your shit is bricked. And then we got, like, one of these disasters over here, where here's the reason why somebody will tell What? you that this is a possibility. ये And so क्या है? let me just go ahead and pan you all over to the outro skill. Glacio damage dealt by nearby resonators other than Hiyuki in the team is amplified by 20% against targets affected by Glacio Chafe for 20 seconds. So basically, Hiyuki Nah, I gives don't like a recommend this. small 20% damage amp to other Glacio characters, assuming that they're hitting something with Glacio Chafe on them. And the reality is that, like, you would need to apply Glacio Chafe before Hiyuki leaves the field, then go swap over to somebody else, and then, like, run some sort of, like, goofy-ass dual DPS sort of composition. This is clearly designed for a Glacio Chafe sub-DPS that applies it themselves, but that character doesn't exist in the game. And so, like, if you truly do want, Pointless. like, I guess you could try something out like this. Remember, this is Hiyuki. And then, like, God forbid, even this. But like I said before, this is like Oh, WUWA's no. equivalent of your Please. 13th reason why. If this is Line how you're नहीं, deciding line to बोल use रहा हूँ, sorry. Hiyuki, I don't even know what to Line. tell you anymore, वही because you नमस्कार. know this is going to be shit. You know this is not going to be good, Yeah. and like you're just admitting that you don't have Please anything don't. else you could possibly use on your account, and it's almost like, what have you been doing up until this time? Maybe there are going to be some people that took a break and decided to come back for the anniversary, and so this is something that they're deciding to do. And like, arguably, if like your yin yang, your ling yang is like, To be honestly, मैं बोलूँ, I will try this. I will be trying this team, exactly this team. अगर मैं Hiyuki को मेरे second account में तोल पाऊँ तो, मैं अगर उठा पाऊँ Hiyuki को, I will be trying this. I will be trying this on my stream. मैं just देखना चाहता हूँ कितना गंदा होता है. I just want to see that. above देखते हैं. S4, I'll try this. technically, S4 there's a तो नहीं buff होगा, here. obviously S0 से होगा. मेरे पास लिंगियन है, तो मैं हार गया था ईमित के बैनर में मेरे सेकंड अकाउंट में. मैं तभी बनाया था, I mean मेरा सेकंड अकाउंट. तो देखते हैं, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है उस अकाउंट में. रीना सीटा पूरा पड़ा हुआ है. आई थिंक अगर तुम्हें ये भी देखना है, मतलब बिगिनर हाँ कैसे खेलते हैं, या फिर तुमने अभी अभी अकाउंट बनाया है तो और क्या क्या चूज करना चाहिए तुम्हें अकाउंट में, तो आई वुड बी स्ट्रीमिंग दैट अगर चाहो तो, वरना तो वैसे ही पड़ा हुआ है वो अकाउंट. Maybe it's not dog shit if he's above S4. You lost a lot of 50-50s. I'm not there yet, so I'm not going to try it. But, like, yeah, maybe. I'm done entertaining. I'm done entertaining stupidity. Now it's time for us to do a bit of a summary, right? Now that we've taken the time, we've looked at all let's these possible see the teams. summary. What's clear is that Hiyuki, at least from Sorry what we've for the seen about her messages. kit and some of her restrictions, So is that maybe, she's a yeah. lot more freeing than other units that we've talked about before. And another big focus of the discussion here will be whether or not she's as restrictive as some of the other releases that नहीं we've है. had in the game. She is more versatile than any I mean any जो भी निकले हैं, even Aimith doesn't have as much team as Hiyuki does right now. बाद में तो और भी आने वाले हैं, पर अभी के लिए Hiyuki भाई बहुत टीम पंप है उसके पास, मतलब कुछ भी बिल्ड कर सकते हो उसके टीम के लिए. ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू क्लियर, सही है, तो मतलब एंड गेम कंटेंट, पर देयर आर प्लेंटी एटलीस्ट यूज करने के लिए, मोर देन इनफ. अगर तुम अभी स्टार्ट भी कर रहे हो, डजंट मैटर, तुम्हारे पास टीम हो जाएगा इजीली. पर व्हाई आई एम सेइंग दैट, सानवा फ्री में देता है, पूरा तुम्हें सानवा फ्री में देता है. एंड obviously she is not good with Hiyuki, but at least Glacio damage का कुछ मोनो बना सकते हो. एंड वेरिना को स्लैप कर लो, वो भी काम करा देगा. वैसे भी मतलब कुछ तो हो ही जाएगा, पर एमिथ के साथ आई डोंट थिंक वो हो सकता है.
क्योंकि इमेज is completely reliant on tune break. Hiyuki is also, but at least Sanwa is not there, right, for Imith. Know who the previous anniversary unit Sigrika के सिग्रिका सिग्रिका पर रेजोनेटर है च्यूयोंग काफी बेटर सपोर्ट है सिग्रिका 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 आई थिंक वो एको वाला ना हाँ तुम तो ऐसे बोल रहे हो मतलब वो अगर तुम कंसिडर कर रहे हो दैट मीन्स ये भी है मतलब गैल्ब्रेना सेम थिंग 3 पॉइंट हाँ अगर तुम मेरे वो स्टेटमेंट की बात कर रहे हो हाँ 3.x में वो दे आर मेकिंग दोज कैरेक्टर्स हाँ थोड़ा लेस रिलायंट ऑन अदर तो हाँ शी इज एन एक्सेप्शन सिगरी का और ऑल्सो निकला ही कितना है निकला तो आई थिंक कितने हैं ईमेथ हाँ ईमेथ का टीम और सिगरिका का टीम ही तो निकला है नहीं लूक है देयर इज लूक लूक इज ऑल्सो अ ग्रेट सपोर्ट मतलब मेन डीपीएस इफ यू डोंट हैव एनी स्पेक्ट्रो डीपीएस मतलब एरियल डैमेज देता है एंड एरियल डैमेज इज ग्रेट because most of the attack will just pass under you so it's also great and he is completely dependent upon I think basic attack damage bonus so Sanwa completely Sanwa and Verina हो जाएगा लूक भी अच्छा है मतलब फ्री टू प्ले के लिए सिगरी का इस सही पकड़े हो वो मैं मिस कर दिया था was Zani. An investment that might have seemed very attractive for people at first, but became quickly a dead end in terms of account progression for a lot of people. A lot of people wish they could refund her. And we're लेकिन सिगरिका के बेसिक डैमेज आने से बहुत बहुत ज़्यादा है बेस डैमेज ज़्यादा तो होगा ही क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जानी सिगरी का फर्स्ट ऑफ ऑल ये इको स्किल डैमेज दे रही है अगर तुम्हें कंपेयर करवाना है ना आई वुड सजेस्ट तुम जो वो दे रहा है मतलब सिगरी का दे रही है फिलहाल तो इको स्किल डैमेज एंड उससे कंपेयर करवाओ फ्रोलोवा को और कंपेयर हर टू गैल्ब्रेना क्योंकि वो लोग भी इको स्किल डैमेज दे रहे हैं पर यू आर कंपेयरिंग सिगरिका विद जानी जानी तो नॉर्मल नेगेटिव स्टेटस डैमेज डीलर है और वो खुद अप्लाई भी नहीं करती सो दैट्स अ मेन प्रॉब्लम मतलब वो कंपैरिजन अच्छा नहीं है एंड क्योंकि डैमेज डिपेंड करता है वैसे ही इस गेम में एटलीस्ट आई थिंक दैट्स द केस मतलब पूरा तो वैसे इंटेंट किया है हाँ ये कैसा डैमेज करेगी या ये ऐसा डैमेज करेगा वैसे वैसे करता है वो लोग दे हैव सेपरेटेड ऑल द कैटेगरीज दैट्स वाई अगर तुम्हें ये मोड खेलना है ना मतलब अगेन हैव टू क्लोज दिस अगर तुम्हें ये मोड खेलना है एंड कंप्लीट करना है स्पेशली ये वाला ये अगर स्टार्ट करोगे ना तुम्हें जब कुछ भी कंप्लीट करने जाओगे स्टार्ट चैलेंज नहीं करने वाला मैं डोंट वरी यहाँ पे तुम्हें स्पेसिफिकली तीनों देते हैं ट्यून ब्रेक देता है ऑब्वियसली ट्यून ब्रेक टीम के लिए एको स्किल देते हैं नेगेटिव स्टेटस ये जेनरिक है इसलिए जेनरिक देते हैं एनिमी टेक्स 20% मोर डैमेज तो ये जेनरिक हो गया एंड 20% मोर हेवी अटैक डैमेज बोनस ये अगस्टा के लिए या यूनो के लिए इस उन लोगों के लिए है एंड ऑब्वियसली यू गाइस कैन अंडरस्टैंड ये किन लोगों के लिए है पर दैट्स माय पॉइंट दे हैव कंप्लीटली सेपरेटेड इट कंपेयर दोस कैरेक्टर विद देयर ओन कॉम्पिटिटर मतलब जो लोग वो दे रहे हैं डैमेज प्रोलोवा ग्रेटर देन सिगरिका ग्रेटर देन गैल्बना
अगर अकाउंट पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो हाँ ट्रू, पर अगर बात कर रहे हो कि डीपीएस कौन सा अच्छा है, आई वुड सजेस्ट, या फिर हाँ हाँ फिर वही डीपीएस अगर अच्छा है तो सिगरी का, जो तुमने सेकंड वाला दिया, सिगरी का फ्रोलोवा देन गैल्वेना, या पर अगर बात हो रहा है कि बैड एस एंड ऑल द फैन सर्विस थिंग्स, भाई अदाएं देखे हैं गैल्वेना के जब अटैक करती है, वो अलग ही है। मुझे अगर गैल्वेना कोई फ्री में दे दिया ना भाई, मैं अलग ही खुश हो जाऊंगा। गैल्वेना चाहिए भाई, गैल्वेना दो मुझे। Here to talk चियोंग नहीं है पर फिर भी। about whether or not Hiyuki might face a similar sort of fate. Because, spoiler warning, she's nothing close to Zani when it comes to her team building and potential. If you're in the situation where you think Hiyuki's restrictions are even comparable at all to Zani's, you just don't know how this game works, and you're kind of just outlining yourself as somebody who's like talking for no reason at all. Hiyuki is way more freeform than other negative status units that we've had in the 100%. past. She actually has more team compositions. She actually has more freedom, less restrictions than even Cardathea. And definitely exact way my fucking point. better than Zani. And one of the main things that I just have to talk about over here with you guys is the fact that anyone really drawing comparisons to a Zani simply don't understand the restrictions that these two units have together. For Zani to really feel meta viable and to do anything, you need Confession Mode Phoebe on the team. Exactly Confession my Mode point. Phoebe does Curse nothing bhai. else in the Curse game and other than the support. way she attacks, the way she moves after each and not each and every attack, but कभी कभी आई थिंक सेकेंड बेसिक अटैक में या फिर थर्ड बेसिक अटैक में वो करती है, मतलब ऐसे स्नेक की तरह ऊपर आती है। Zani. She is अलग a ही अदाएं dead हैं। end unit with like no room for expansion, no additional team comps, no way to deal other types of attribute damage either. It's just all Yep. Spectro. And while Phoebe does have a second form, Absolution, that's her main DPS form, which then makes Zani redundant, so you just play Phoebe on Confession mode ever since you pull Zani. And so basically, they're both dead end units that have no additional room to do anything else. And it's kind of the same exact thing with Cardathea and Chakotay. They both kind of need, or like Cardathea kind of needs Chakotay unless you're going to pull multiple dupes of Card. And if you're pulling multiple dupes, then what the fuck are we even talking about anymore? Exactly my point, and I have done the same thing. I liked Carteria so much, but I obviously pulled multiple dupes of her, ignoring Chikona. क्योंकि चिकोना मतलब उसका आउट्रो बहुत ही अजीब तरीके का है। 100% एरो समथिंग कुछ है, मतलब नॉट बेसिक एरो डैमेज, ठीक है, मतलब जो एरो डैमेज तुम्हारा बेसिक मिलता है वो डैमेज नहीं है 100% इंक्रीज हो जाएगा, ना 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 ना। एरो जो नेगेटिव स्टेटस है उसका डैमेज, अगर एरो का नेगेटिव स्टेटस जो है, अगर उसका तुम डिटेल्स पढ़ोगे तो ऐसे काम करता है, मतलब स्टैक अप्लाई कर दिए, वो एक्सपायर हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत डैमेज होगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत डैमेज होगा, वो डैमेज का वो एम्पलीफाई करती है चिकोना, वो 100% डैमेज बफ करती है, मतलब अगर डबल हो जाएगा अगर तुम वो एक बार स्टैक एक्सपायर हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट डील्स 100 डैमेज, ठीक है, टू एनिमी, तो उसको वो 100% इंक्रीज करेगी, तो मतलब 200 डैमेज देगा उसके बाद। तो इतना कुछ क्यों यूज क्यों करना है मुझे, छोड़ो भाई। एक एक चीज जो उसके चिकोना कैन डू एंड अदर पीपल अदर कैरेक्टर्स कांट इज दैट यू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर इको सेट। यू कांट जस्ट मेक एरो रोवर यूज द फुल पोटेंशियल ऑफ दैट एरो सेट जो चिकोना यूज करती है, ठीक है, उसको लिए तुम्हें क्या बोलते हैं, आई थिंक यू हैव टू यूज यू हैव टू डील नेगेटिव स्टेटस ऑफ दैट एरो एलिमेंट। अगर कर पाओगे फिर वो एक एक्टिव फुल्ली करता है, फिर तो नहीं करता, फिर तो ऑब्वियसली ये एरो ट्रैवलर यूज नहीं कर, एरो ट्रैवलर, एरो रोवर, सॉरी माय बैड, गेंशिन आ गया मेरे आत्मा में। And so Cardathea needs Chakotay. They're kind of like stuck in Arrow, and that's like kind of like Cardathea is never going to do anything else.
And Chakona is only going to support other arrow teams in the future, deal more arrow damage. Hiyuki, on the other hand, does have that desire to have Chisa to gain that additional snow but rust not stat. mandatory. But guess what? Let's just say you do decide to pull Chisa for your Hiyuki. Well, now you have Chisa available to support the Fusion Burst Imeth team. So now you're covering Fusion. Then you have Chisa to go ahead and round out the Cardathea team. So now you got Arrow. And of course, you're going to have Chisa to work with your Hiyuki for Glacier. That's way more valuable. That's a bunch of different attributes. And you have... हाँ 50,000 है मेरा देखोगे not showing off but still I want to make you see it रुक जाओ well, just look at this how much it is 52 बेसिक अटैक कम है उसके लिए थोड़ा शो ऑफ कर लूँ मिड मैक्सिंग भी मैं कर रहा था इसके लिए पर ये कम है पर उसका ज़्यादा है सो चलो लेट्स कंटिन्यू कहाँ पे था या सॉरी 3 teams in 3.3 that Chisa's able to... दैट्स द थिंग सब बेसिक्स मतलब सब स्टैट्स में मुझे मिला है HP परसेंट 10% बैग वैसा रुक जाओ दिखोगे बाद में दिखाता हूँ लेट्स कंप्लीट दिस नहीं दिखा दो भूल जाऊंगा भूलना नहीं है दिखा दो मैं बहुत भुलक करूँ लुक एट दिस 10% HP 8.6 10.1 ये इसमें नहीं है इसमें तो मेन स्टैट में ही है 6.4 सो दिस इज माई कार्थिरिया पीस मुझे इसका बड़ा में कुछ नॉलेज नहीं है हाँ वही अभी दिखा रहा हूँ उसके लिए एक वे है टू फार्म दिस एकोज अगर तुम वैसे नहीं फार्म करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत रिसोर्स वेस्ट होंगे तो रिमेम्बर मतलब पहले 5 या पहले 10 मतलब एको का जो लेवल अप करना है 10 मतलब ऑर्डरली करो पहले तो ये कर देना अगर नहीं करते हो तो लेट मी टीच यू वन थिंग इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ कर रहे हो ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस एको ठीक है मेरे पास HP है करते के लिए लगेगा ओके वेरी गुड तो पहले तो ये चेंज कर देना ये जो मेरा सेटिंग्स है एग्जैक्टली कॉपी कर लेना यही बेस्ट है इफ़ यू आर नॉट मिड मैक्सिंग अदर स्टफ पर आई डोंट थिंक तुम लोग करोगे वो ये 5 तक बढ़ाता है ये ऑटोमेटिक सिंक कर देता है मतलब सिंक मतलब अगर तुम्हें 5 मतलब ये अगर बंद कर दूँ ओके नहीं किया मैंने तो बंद कर दिया मतलब यहाँ से ये निकल गया देख रहे हो एंड अगर मैं 5 मतलब 5 क्यों एक ही नहीं 5 होगा 5 किया ये आया अनलॉक हुआ राइट इसके बाद ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा अगर तुम ये एनेबल कर दो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे जाने के बाद ये नहीं करना पड़ेगा ये तो पहले ही गंदा हो गया मतलब ये कैसे करते हैं ये बता दे रहा हूँ हो गया 5 हो गया वेरी गुड एंड ऑल ये तुम्हारा काम का चीज़ नहीं है एक और बार करो एक और बार कर लो करने के बाद ये गया तो इतना भी मत देना ये वेस्ट हो रहा है इसको दे देना थोड़ा बहुत आ जाएगा ये हुआ 10 हुआ बेसिक एडेड डैमेज ओके दिस इज़ अ गुड थिंग मतलब एक काम का स्टैट है ये मुझे लगेगा ये अभी भी 3 चाहिए 2 चीज़ चाहिए क्रिट रेट क्रिट डैमेज बहुत हार्ड है इसलिए हम लोग क्योंकि यहाँ पे बेसिक अटैक आ गया है यहाँ पे बेसिक अटैक डैमेज मतलब बेसिक अटैक डैमेज जो कार्थेरिया के लिए चाहिए ये आ गया है सो वी आर गिविंग इट अ वन मोर शॉट मैं तो बहुत एक्सपी वेस्ट कर देता हूँ एक मंथ का 5 को सबमिशन वही इसलिए समझा रहा हूँ कैसे करना है मुझे पता है बहुत लोग करते हैं मतलब मैं भी करता था ऑब्वियसली मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना मैं बहुत यूट्यूब देखा तो इसके बाद मैं आई केम टू दिस कंक्लूजन कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ पहले ये सेटिंग्स कॉपी कर लेना ऑब्वियसली उसके बाद क्या करना है उसके बाद करना है कि तुम्हें 10 मतलब पहले 10 कर देना डायरेक्ट 10 अगर करते हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कर देना और देखना
any useful stats? Have you got any useful stats? यहाँ पे इन आवर केस कार्तेटिया है, कार्तेटिया के लिए ये को सेट है, तो ये बेसिक अटैक डैमेज ओके, वी कैन मेक अ यूज ऑफ इट, राइट? सो लेट्स कीप इट, लेट्स रोल वन मोर टाइम, एक बार और करते हैं। 5-15 में आएगा, ओके 15 आ गया, ज़्यादा नहीं करना, 15 आ गया करना, अटैक आया है एंड वी डोंट नीड इट। देयर इज अ ह्यूज लेस चांस यहाँ पे क्रिट रेट और क्रिट डैमेज आएगा, राइट? तो ये कुछ काम का नहीं है, इसे फेंक दो, ये लॉक हटाओ, ये जेड पकड़ाओ, ये फेंक दो, और इसको कुछ नहीं करना, इसको यूज भी नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आके इसको ऐसे ही मत डाल देना, ठीक है? ऐसे ही मत डाल देना, ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यूज दिस ओनली, मतलब अब तुम बोलो कि भाई वो ऐसे फेंक के रहने थे, नहीं रहना है उसको, बाद में हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड करने के बाद ये चीज़ें जो लगता है कैप्सूल, ये हम लोग को रिफंड मिल जाता है। तो इसको अब इसको कैसे करते हैं? नहीं रुको रुको, ये अटैक है, नहीं वेस्ट मत करना, अटैक एच पी, या लेट्स डू दिस। ये आया 5 3 एंड ओके 1 हो गया, 10 हो गया, 3 और 1 एच पी आया है, रेजोनेंस लिबरेशन नहीं चाहिए पर एच पी आया है, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट? लेट्स डू 15, या 15 हो गया, क्रिट रेट ग्रेट, देयर इज अ ह्यूज चांस जो इस दोनों में से हम लोगों को एक मिल सकता है, सो वी विल डू इट अगेन, मतलब एक बार और करते हैं, चलो 20, ओके 25 मत करना, क्योंकि जितना एक्सपी, जितना कैप्सूल तुम्हें 20 करने में लगे हैं ना, उससे आई थिंक ज़्यादा नहीं बनूंगा, पर उसका 70% लगता है जस्ट 20 से 25 करने में। सो डोंट डू इट प्लीज़, वेस्ट करते हो एनर्जी रिचार्ज, ग्रेट, पर मुझे क्रिट डैमेज इज मोर लाइकली नॉट टू कम, राइट? क्रिट डैमेज आने का चांसेस बहुत कम है, आई डोंट थिंक आने वाला है, पर एज आई हैव ऑलरेडी गॉट एनर्जी रिचार्ज विच आई नीड इन माई करेंट कंडीशन, सो लेट्स डू इट। क्या कर सकते हैं देख लो, मतलब पहले स्ट्रीम को थोड़ा पीछे करके देख लेना कितना लग रहा था, अभी देखो कितना लग रहा है, मैं देते जा रहा हूँ। हाँ कितना लगा, कितना लगा? 12, ये 12 लग गया, एचपी मिला। वेल ऐसे करना है, मेरे लिए काम का नहीं है, पर हाँ ऐसे करना है। और अब तुम बोलोगे इसका क्या करना है, सो अभी कैसे करना है, एक सब करके इस करने के बाद यहाँ पे जाना, बी प्रेस करना, या फिर कुछ भी करो, मतलब बैक खोल देना, सिर्फ यहाँ से करो, बी प्रेस करो, या फिर यहाँ से जाओ, कुछ भी कहीं से भी जाओ, बैक कहाँ रहता है, हाँ बैक, यहाँ पे जाने के बाद एको में आना, फिल्टर करना, फिल्टर कैसे करता है मैं भूल गया, डिसलाइक, डिसलाइक में ये आया, ये डिसलाइक मतलब डिस्कार्ड का ऑप्शन है, इसको ये प्रेस कर दो, यही मैंने जस्ट किया है, ठीक है? नहीं ये नहीं करना, अभी रहने दो इसे। 1 डिसलाइक, डिसलाइक में तो यही आ रहे हैं, उसको मैंने डिसलाइक नहीं किया क्या? तो इसको रिमूव करने के बाद देखो वापस मिल रहा है हम लोगों को, जितना था ऑब्वियसली उतना नहीं मिलता, पर बहुत सारे मिल जाते हैं, मिल गया जी। तो ऐसे ही करना रहता है, ऐसे करने से आई थिंक थोड़ा बहुत सेव होता है तुम्हारा। आई होप इट वॉज इंफॉर्मेटिव, ये मैं वीडियो काट के दे दूंगा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ओके लेट्स कंटिन्यू, आई होप यू वर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। To be worked with, which is a lot more than just the one team that Confession Mode, Phoebe, and Zani have when they're working out Oh wait, I don't think you guys are able to say it. Wait, हाँ चलो, अरे मैं नया स्ट्रीमर हूँ भाई, थोड़ा तो इधर उधर हो जाता है। together. So anybody
trying to say that like Hiyuki has the same level of restrictions as Azadi is completely speaking out of their booty hole. They got no idea what they're talking about, and they should be laughed out of the room because they're basically just admitting they're clueless about how the game works, and they're clueless about how team building in the game works as well. But there are still going to be a ton of people that try to do that. And the main reason, I think, is because of sunk cost fallacy. You got a bunch of Zodi mains who are basically operating the same as farm animals, pigs in mud. And because they're embarrassed to be this dirty, bro, they just want, like, more people in the dirt with them, and they'll try to talk shit about how Hiyuki operates because of that. That behavior is ridiculous. That behavior is stupid. And when it comes to team building, when it comes to restrictions, I'm honestly of the opinion that Hiyuki is actually one of the more free-form ones we've had. Exactly my point. And should be a very, very, very good addition, meta-wise, to the game that obviously... भाई, this is a... मतलब पेपर में लिखा हुआ है, मतलब obviously literally नहीं लिखा हुआ है, बट कुरो एक एनिवर्सरी कैरेक्टर को ऐसा बनाना ही है. कुरो ने पहले ही बोल दिया है, ये बनाएंगे ही. There is no doesn't break it completely, exception, but also doesn't feel like they need specific tools to do anything at all. Coming and I think Imeth over here has really kind of like paved the way, especially with her ability to be like a dual resonance form unit. Got that Toon Rupture team as well as the negative status team over here with Fusion Burst. And while the Fusion Burst team has been dog shit, really fucking bad, until the release of Denya, who's still going to be in the second half, at least she's got those two separate teams to work with. And to me, at the very least, having Imeth and both Hiyuki on your account, you're going to be able to sort of like flip-flop and switch around. Sorry अगर मेरा कैरेक्टर कुछ फंकी कुछ किया है, मतलब मैं पीछे मेरी मम्मी से बात कर रहा था, अंकल ने कॉल किया था. Units. And it's going to be a lot of value as long as you have those two characters you built out their teams, because they should be able to actually use their teammates very interchangeably moving forward. So if you have Imeth, you've been building her out, you've been thinking about her expansion, you're pulling Denya and Chisa too, then you're going to have a lot of room for growth in the future, and Hiyuki is going to be a great add to your account. But if you haven't really been engaging in 3.0, and you're maybe somebody that's just returning for the anniversary, you don't have Lene, you don't have Mornier, you don't have Chisa, you don't have any of these units, then maybe you'd like take a step back for a second and consider whether or not you're pulling Hiyuki, because Hiyuki's value grows exponentially based off the other units you've had before on your account. And if you kind of have like nothing because you've been taking a bit of a break, your shit might be cooked if you pull Hiyuki, because then you kind of are locked in for Chisa because you got none of her other teammates. So do keep that in mind. I don't think that she's like a great Giga free-to-play pull like many other units in the past have been, like Luke Herson and stuff like that. See? But if you already have a developed, well-fleshed-out account... मैंने ये वीडियो देखा नहीं है, फिर तो देख, मतलब पहले ही देख पाते थे, मैंने देखा था. See my point. Luke is pretty free to play. Sanwa for free, वेरिना वैसे ही मिल जाती है. शॉर्टकीपर अगर तुम दबा के खेल रहे हो, शॉर्टकीपर भी मिल जाती है. But yeah, Luke is one of the best free-to-play character you can get in your account. Hiyuki should feel good, as she doesn't come close to as many restrictions as some of the units in the past. That'll be it for this one, ladies and gentlemen. Talking a little bit about Hiyuki's team building and some of the potential problems she has. Definitely not at the same level as other units, but definitely let me know what your thoughts are regarding that. Peace Content. out. It was really helpful. Okay, so yeah, that's the thing. That's the thing. और 3 people watching me right now. तो यहाँ पे 2 ही दिखा रहे हैं. Hello, new guys. Typically मैं ऐसे करता नहीं हूँ. Typically मैं stream नहीं करता वैसे react वाला कुछ. पर okay. ये अच्छा था. ऐसे बहुत भी करना है. और कुछ है रिएक्ट करने को? मतलब कुछ है नहीं, मुझे मेरे पास कुछ है नहीं. मैंने सब कुछ कर दिया है पहले ही. आवाज नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूरा हुआ का साउंड कम किया है. I've already completed most of the things in this account. करना क्या करना है.
वेट, और कुछ तो नहीं है। लेट्स सी, लेट्स सी। साउंड बढ़ाऊं पहले। Check every box. फ्री टाइम में रिएक्ट ही कर दिया करो। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। वो तो फ्री कंटेंट है, आई वुड से। मतलब तुम लोग बोलो किस में रिएक्ट करना है, ये तो अलग ही बग है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तुम लोग के साथ होता है ये क्या है? ये नया कुछ आया है बग? वो तो मेरा फ्री कंटेंट ही है। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक के कर दो वो का ऑफ। अच्छा, ऑफ कर दूं? ओके, ऑफ कर दो। फिर क्या सुनोगे? मतलब ओके, लेट्स मेक यू सी। मतलब मेरे पास कंटेंट के लिए क्या है? बस कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये क्या क्या कंटेंट करवाऊं? मतलब क्या दिखाऊं तुम लोगों को? इसमें कुछ है? आई डोंट वांट टू डू दिस। एटलीस्ट मुझे कुछ रखना है इसके लिए कैरेक्टर। मतलब कुछ है, कुछ पहले देते थे हुआ हम लोगों को, अभी नहीं देते तो। कुछ रेली क्या ये लोग? इन लोगों को नहीं खत्म करना मुझे। कीप देम एज दे आर राइट नाउ। तो मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है। ओके ओके, हैव योर डिनर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। फिलहाल और क्या करना है? और अभी तो कुछ नहीं है। आई कैन प्ले अदर गेम्स। मतलब इफ यू गाइज वांट टू सी माय रेसिडेंट इवल 7 गेम प्ले में, आई कैन डू दैट राइट नाउ, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है। अनटिल 30th अप्रैल आ रहा है, आई वोंट बी हैविंग एनीथिंग। क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, वही तो था। अच्छा, गेम सेटिंग्स में Yeah, आई कैन डू दैट, पर there. जब मैं बाइक राइड करता हूँ ना तब लगता है। तब हाँ, म्यूजिक चाहिए ऐसा कुछ। ये बोल रहे हो ना? 60% शुड बी फाइन। चलो, तुम्हारे लिए कर दिया। एंड टेल मी अबाउट कल के लिए क्या है? मतलब मैं तो कल एनटी स्ट्रीम करने वाला हूँ। मतलब व्हाट डू यू थिंक? मतलब कैसा होने वाला है एनटी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? एनटी अच्छा होने वाला है? एवरनेस्ट टू नेवरनेस्ट ऐसा कुछ, जो भी उसका नाम है। नो? क्या नो? मतलब अच्छा नहीं होने वाला? स्पेसिफिकेशन देखे हो उसका? वेट, अगर नहीं देखो तो मैं दिखा रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट का ही दिखाऊंगा। वेट, और मेरा स्पेसिफिकेशन देखना। भाई क्या बनाया है? मतलब ये क्या है? ऑफिशियल नहीं है पर हाँ, ये क्या है? ये क्या? ओ, म्यूट व्हेन द गेम इज इन बैकग्राउंड, ऐसा कुछ सेटिंग्स है? ओके, आई सी। ओके ओके ओके, चलो। गुड गुड, मैंने देखा नहीं था वो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, तो ये क्या है? मतलब ये दिखाओ, ये भी इसका मतलब का बोलो मुझे कुछ। ये क्या है? i7 10th gen, i7 10th gen they are telling me to get just to play this game। ये मेरा जीपीयू है भाई, इसके पास एक एस लिख दो। ये मेरा जीपीयू है। आई वाज टॉकिंग अबाउट द above थिंग। ओ अच्छा, ओके ओके ओके। मतलब नो बोल रहे थे इसके लिए, म्यूजिक के लिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये जो सेटिंग्स रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं ना, इसमें तो आधे लोग खेल ही नहीं पाएंगे। इसमें तो आधे लोग वैसे ही नहीं खेल पाएंगे।
आई एम जस्ट विशिंग दैट मेरे सिस्टम में रन कर जाए ये गेम, क्योंकि मुझे कंटेंट निकालना है इससे। बहुत है कंटेंट इसमें। GTA ब्रो, यू आर गेटिंग GTA एंड यू गाइस कैन प्ले एज वेल विथ मी इफ योर सिस्टम अलाउज यू टू प्ले, क्योंकि रेसिंग है, बहुत सारे मल्टी एक्टिविटीज हैं वी कैन डू विथ कम्युनिटी। पर यहाँ पे नहीं मिलता ना। वैसे कैसे मतलब बोलूँ, वुआ में नहीं है। गेंशिन में आई डोंट थिंक देयर इज मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन एज अ कम्युनिटी, पर एट द सेम टाइम इसमें भी नहीं है। मेरे पास तो स्टोरेज ही नहीं है। स्टोरेज ही नहीं है, वो तो अलग ही चीज है। मेरे पास भी नहीं है ब्रो। मैंने क्या क्या डिलीट किया, मैंने RE2 RE3 डिलीट कर दिया है। RE2 डिलीट कर दिया, RE3 डिलीट कर दिया, जस्ट टू मेक द स्पेस। जस्ट टू मेक द स्पेस मैंने RE2 RE3 डिलीट कर दिया है। अलॉन्ग विद आई थिंक CS2 भी डिलीट कर दिया है। लीग ऑफ लेजेंड्स भी डिलीट कर दिया है। मैंने कितने सारे गेम्स डिलीट किए, उसके बाद ये एक गेम डाउनलोड किया है मैंने। मेरे पास भी स्टोरेज नहीं है, सेम थिंग। But obviously not everybody has the luxury to delete all the stuff, right? So बहुत important files भी रहते हैं, no bro, don't delete those at least. But the system requirement they are asking is too much. It's too much भाई। GTA 5 का भी नहीं रहता है। Okay bro, dinner time off। fuck ये नाइट बॉट। ओके ब्रो, डिनर टाइम तक, हाँ। बाय 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 बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ये नाइट बॉट को मैं कल से निकाल दूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय 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 बाय। कल से मैं निकाल दूंगा, डोंट बी वरीड। अगर हाँ, बाय बाय। मैं चैट में भी लिख देता हूँ। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू चैट, क्योंकि तुम्हें टाइम आउट दिया होगा। मुझे पता है तुम लिख नहीं पाओगे। इट्स फाइन। बाय बाय। चलो, उसके बाद तो आज कुछ करने का नहीं है। एंड द अदर पीपल हु आर सीइंग मी, प्लीज टाइप समथिंग सो दैट आई कैन कन्फर्म। हाँ, कुछ तो है। थिंक एक ही एक्स्ट्रा आदमी देख रहा है मुझे। कुछ रिकमेंडेशन है मेरे लिए कि मैं देखूं? फिलहाल तो नहीं है मेरे को कुछ करने का, तो आई विल बी लीविंग। आई कैन डू वन थिंग, आई कांट थिंक। I shouldn't be seeing, showing this. I mean, shouldn't be doing that. ओके, फिलहाल तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मतलब कुछ है तो नहीं मेरे पास। ये फुल कर देते हैं फिर। कंटेंट के लिए तो और कुछ नहीं है। Got a long bucket list. क्या कर रहा था आज? मैंने ये तो कंप्लीट किया। मेरा एस्ट्राइड्स देख लो, जो भी देख रहे हो, क्योंकि इसके बाद आई विल बी स्ट्रीमिंग ऑन थर्सडे and I will be pulling for Hiyuki in the stream. If you don't want to miss that, please do subscribe, and if you want to support me by any means, so yeah, please do subscribe. 91 polls है मेरे पास। Not only that, 91, I also have 12 here, so 100 तो वैसे ही हो गए। And along with that, यहाँ पे I have already polled 31 times, so I have 31 PT for it. Don't think you guys will be able to see that, right? Yeah, sorry, very sorry। मैं अभी भी न्यू हूँ स्ट्रीमिंग में, मैं आगे का नहीं सोच रहा। सॉरी होता रहता है। ओके, सो या
तो 2 घंटे का वैसे भी स्ट्रीम हो ही गया है. So yeah, so how many pulls I had? Let me show you once again. I have what? Not this. Yeah, 91 pulls. 91 pulls here, and यहाँ पे right here I have already pulled around 30. Yeah, 30. 6 into 5, 30. 30, and for character banner I have pulled 35, 31. Okay, 31, and I have 12 of this as well. So I have plenty of them, and my character, I'm talking about Hiyuki, is guaranteed. So I'm pretty much guaranteed. और क्या बोलूँ भाई, यही है जो है. Gotta go fast. I'm thinking of this. एक्सप्लोरेशन देखना है मुझे, मैं एक्सप्लोरेशन कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बाकी है फ्रॉस्टलैंड में. I need to do that. Obviously it will be laggy as hell, keep that in mind. Damn, you are a silent watcher, which is not a bad thing. Not complaining, but फिर भी. Please chat, say hi, do anything, do something. I'm not complaining, but still, do something. This recommends, मतलब, if you chat, the stream gets recommended to others. मुझे नाइट बॉट को निकालना है. ये पूरा गंद मचा रखा है चैट में, एंड आई डोंट लाइक दैट एट ऑल. ये गंद को हटाना पड़ेगा. व्हेन आई एम अ बिग स्ट्रीमर देन दिस माइट बी हेल्पफुल, बट अभी तो नहीं. नो, इल्ले नॉट डूइंग इट्स जॉब. Gotta go Because fast. there are no people, not many people are chatting, right? Okay, you are now gone. भाई तुम आए क्यों थे? Not complaining, but फिर भी I don't have any content, right? Is it lagging too much? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कुछ करने का है नहीं भाई हुआ में. जिसके लिए आया था मैंने कर दिया है. एंड थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू माय व्यूअर, एटलीस्ट द स्ट्रीम लास्टेड अ लिटिल बिट लॉन्गर. मैंने सोचा था कि 1 घंटा के बाद हो जाएगा, और फॉर्चुनेटली नहीं हुआ. दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से. थैंक यू. ओके. और अरे 48 Congo. Are 48 not that much, bhai. Most of them are from shorts. And I think there was a person who was watching. I don't think you were the person. Are you? I don't know. Okay. So yeah, at least there are some people liking the stream. That was great. Thank you. चलो एक्चुअली इतना ही रखते हैं. नथिंग टू से. Reaction channels are great. What to react, what not to react, what to do, what not to do. अब स्ट्रीम होगा हुआ जब Hiyuki will be launched. Let's keep our lineage here and do the outro. नहीं, मित के साथ करेंगे. Okay guys, bye bye. Thanks for joining me.
Thanks for joining me in my stream. I really had fun. बस यही बोल रहा था. थैंक यू.